Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 4444, 2371 7106 and 23421050. And don't forget to prefix 011 if you're calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, हर्ष रंजन। नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। सप्ताह का पहला दिन और हम खास तौर पर नजर डालेंगे कैसा रहा बीएसई और एनएसई। और हाँ, श्रोताओं को भी हम आमंत्रित करते हैं, अगर आप चाहें तो शेयर मार्केट से संबंधित या देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइंस हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 717 106। तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ लगाएं। अपने सवाल पूछें, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने खास तौर पर स्टूडियो में आमंत्रित किया है मार्केट एक्सपर्ट यामिनी अग्रवाल को। यामिनी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। Welcome, Yamini. And now let's begin today's edition of Market Mantra with the headlines in English. In B20 summit, PM Narendra Modi has called for a global framework to ensure the ethical use of artificial intelligence. Indian and the UK officials continue their negotiations to iron out differences on the proposed free trade agreement FTA, and key domestic share indices witnessed gain. Sensex closed near 65,000 mark, Nifty finished above the 19,300 level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने B20 सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिकतापूर्ण इस्तेमाल के लिए वैश्विक ढांचा बनाए जाने का आह्वान किया। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते के प्रस्तावों पर असहमतियों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखा है। और घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त, सेंसेक्स 65,000 के पास पहुंचा तो निफ्टी 19,300 के स्तर के पार हुआ। और ये साल बहुत खास है भारत के लिए, क्योंकि हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। अगले महीने G20 हमारे यहाँ हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। और उसके पहले B20 यानी बिजनेस 20 की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक ढांचा बनाए जाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एल्गोरिदम पूर्वाग्रह और समाज पर इसके विघटनकारी प्रभाव पर चिंता जाहिर की। श्री मोदी ने स्किलिंग और रीस्किलिंग के संबंध में नैतिक विचारों पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों को मिलकर सुलझाना होगा। उन्होंने कहा कि एथिकल एआई के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक व्यापार समुदायों और सरकारों को मिलकर ये काम करना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए भी एकीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने एक वैश्विक ढांचा बनाए जाने का सुझाव दिया, जहां सभी हितधारकों के मुद्दों का समाधान किया जा सकेगा। श्री मोदी ने वैश्विक कारोबार से उपभोक्ता के हितों के बारे में बात करने के लिए एक दिन तय करने को भी कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि साल में एक दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता देखभाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास मजबूत करने में मदद मिलेगी। And before we continue the story and discuss this with Yamini, we have our first caller joining in from Kolkata, Vikas. Vikas, welcome to the show. नमस्ते मार्केट मंत्रा। नमस्ते, सवाल पूछें अपना। शेयर मार्केट में जो अपार सर्किट होता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है?
जो सर्किट होता है वो प्राइमरीली वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है और उसके लिए देखा जाता है कि शेयर पहले कुछ समय और उसके बाद के कुछ समय में कितना उछाल या कितना गिरा है और उसके अंदर 5-10% का सर्किट फिल्टर लगाया जाता है. Yes, and different stocks have different limits as far as the upper and the lower circuit is concerned. So Yamini, continuing with the story of this B20 India summit, we see the Prime Minister is exhorting about the ethical use of AI and cryptocurrency. Now this sounds very ironical and a bit of, I would say, on the other line, on the other side of what RBI said some time back. RBI was completely against the use of cryptocurrency. This is a given. So how can we, and they were also coming up with some digital currency of their own, the RBI, they had announced something about it. So how do you see this dichotomy happening between the statement of the Prime Minister and the RBI's stance earlier on? Well, I don't see a dichotomy here because primarily when RBI says that it does not recognize cryptocurrency as a legal tender, and also Nirmala Sitharaman says that cryptocurrencies rules and regulations need to be defined at a global level, and they also tax the cryptocurrency. And further, the PM says that it needs to be ethically utilized. Clearly indicates that the role of the cryptocurrency has been increasing on a widespread basis, and there needs to be a regulation which takes that into consideration, that it only channelizes its work in the formal sectors of the economy and does not become a part and parcel of an economic system which is deterrent or in any manner damaging to the economy. And we have seen money laundering or various other nefarious activities in the economy which are a lot of times governed by anonymous money, even black money or other money, which cryptocurrency or the other users can do. Also, when we talk about AI, a lot of times when the data or other things are utilized to exploit somebody or to misuse the information, then things may not be right, like creating opinions or changing opinions or affecting election results or affecting other things. They may be having a detrimental effect on the overall economic well-being. योगेश हमारे साथ अगले कॉलर हैं दिल्ली से. योगेश जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर. नमस्कार. मेरा जो सवाल है वो ई-रूपी को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक रूपी, इसकी स्थिति अभी वर्तमान में क्या है? नहीं, आपका सवाल नहीं सुनाई दे रहा, आपको फिर से बोलना होगा. योगेश जी, आपके बैकग्राउंड में भी आवाज है, आप दोबारा पूछ लें शांत जगह पर जाकर. आई होप अभी आवाज आ रही है. जी पूछें. ई-रूपी को लेकर के सर क्या स्थिति है वर्तमान में, और अगर आम आदमी को यूज करना चाहे तो कैसे यूज कर सकता है? जी देखिए, जब आप ई रुपी की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक रुपी की बात कर रहे हैं. तो इसमें दो फॉर्म्स हैं जिसमें हम अभी जो यूज़ करते हैं, आप पेटीएम, फ़ोनपे या आप किसी भी डिजिटल वॉलेट के माध्यम से या ऐप के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं, उसे भी ई मनी कहते हैं और ई रुपी कहते हैं. ऐसे ही आप जब नेट बैंक ट्रांसफ़र करते हैं या और ट्रांसफ़र्स करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रुपी कहते हैं. जो एक दूसरा फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रुपी का आ रहा है वो है एक डिजिटल रुपी, जो आरबीआई ने लॉन्च किया है, जो अभी पायलट टेस्टिंग स्टेज पर है, जिसके अंदर आरबीआई ही वो डिजिटल रुपी जो है इशू करेगी और रिस्पॉन्सिबल होगी. जैसे आपका करेंसी नोट होता है बिल्कुल वैसे ही, पर डिजिटल फॉर्म में होगा. तो ये दोनों ही मैकेनिज़म्स कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी लाएं, ट्रांजैक्शंस एक इकॉनमी में इंक्रीज़ करें ताकि लोगों को सहूलियत मिले और वो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे बढ़ा सकें. We are joined in by our next caller, Atanu Saha from Kolkata. Atanu ji. Good evening. Good evening, Atanu. Thank you, everybody, sir. My question is, what relation with assets with liability? And another one, आप अपना क्वेश्चन प्लीज रिपीट करिए. Can you just repeat your question, Mr. Saha? My first question is, what relation with assets with liability? And my second one, this is how public habituate with alternative. Thank you.
Your first question was the relationship between assets and liabilities. These can be on different fronts, which can be on individual, corporate, or government. Assets basically means what you own. So they can be physical assets or financial assets or intangible assets also. Physical assets like real estate or gold or anything else, land. Your financial assets like bonds, equities, mutual funds, and others. Similarly, liabilities refer to what you owe to somebody. So when you take a loan, that becomes a liability. Similarly, when an individual takes a loan, it is a liability. Similarly, a company can take loans from public or from companies or from financial institutions or banks. So they are also reflected in the liability side, either in the form of equity or in the form of debt. Assets and liabilities, the relationship is in terms of what can fund what and in what manner. Like long-term liabilities can fund long-term assets and short-term liabilities can fund short-term assets. SPS जैन है हमारे साथ, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें क्योंकि एक स्टोरी के साथ निश्चित हैं. We are continuing with our next story. The Indian and the UK officials will continue their negotiations till the August end to iron out differences on the proposed free trade agreement FTA. In a statement, Commerce Ministry said negotiations will be followed by a review at the higher level ahead of the G20 Trade and Investment Ministers meeting, that is TIMM, at Jaipur. The progress of the negotiations was reviewed by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and UK's Secretary of State for Trade Kemi Badenoch. Both leaders reiterated the shared vision of achieving a mutually beneficial trade deal based on the principle of reciprocity that reflects the evolving economic landscapes of both India and the EFTA, that is European Free Trade Association countries. Mr. Goyal and Swiss State Secretary for Economic Affairs Helen Budliger Artida also held talks on ways to strengthen economic ties. और चूंकि आज सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार है, मार्केट 2 दिन के बाद खुला है, हम थोड़ी सी शेयर मार्केट की भी जानकारी दे देते हैं और उसके बाद अपने कॉलर्स के पास आते हैं जल्दी से. घरेलू शेयर बाजारों में आज तेजी रही है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 110 अंक की बढ़त के साथ 64,996 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 40 अंक बढ़ा, 19,306 पर रहा. विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई. The key domestic share indices witnessed gain today. The BSE Sensex closed near 65,000 mark while the NSE Nifty finished above the 19,300 level. The Sensex gained 110 points or 0.17% to end at 64,996. The NSE Nifty also appreciated 40 points or 0.21% to settle at 19,306. And in the broader market of the BSE, the mid-cap index surged 0.59% and the small-cap index appreciated 0.67%. And in the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 15 companies appreciated while those of 15 declined. L&T rose 2%, Mahindra & Mahindra gained 1.9% and HDFC Bank advanced 1%. On the other hand, Reliance declined 1.1%, Nestle slumped 0.9% and HCL Tech fell 0.6%. The overall market breadth was positive as shares of 2,066 companies appreciated whereas shares of 1,676 companies declined. A total of 165 shares remained unchanged. Joining us from Greater Noida is SPS Jain. Jain साहब सवाल पूछें. हाँ नमस्कार जी, मैडम अग्रवाल को भी नमस्कार जी. नमस्कार. मेरा सवाल यह है कि पिछले कुछ महीनों में और लास्ट 1 ईयर में कुछ आईपीओ ऐसे आए हैं जो खुलते ही इनकी वैल्यू आधी रह गई, कुछ 50% से भी नीचे लिस्टेड हुए. तो फॉर एग्जांपल नायका है, जोमेटो है, पेटीएम है, एलआईसी है. तो इसमें क्या व्हाट इज दी मोडस ऑपरेंडी, इसको रेट फिक्स करने का क्या तरीका है और इसमें सेबी का क्या रोल है और कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर जिसके शेयर इस तरह से गिरते हैं उनके ऊपर क्या फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है? जी जैन साहब, कंपनी के बारे में बात करें इससे पहले हम ज़रूर एक बार दोबारा रिपीट कर देना चाहते हैं कि स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ किस रेट पे आपकी लिस्टिंग हुई है और किस पे आपने परचेज किया है, इसमें थोड़ा फ़र्क ज़रूर हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि सारे 50% से नीचे ही खुले हों, कुछ ऊपर भी होते हैं. लेकिन क्या ये कैसे ये ऑपरेट करता है, इसके बारे में आप जी देखिए, जब भी आईपीओ आता है वो सब्सक्राइब किया जाता
जाता है और उसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं. या तो कंपनी अपनी प्राइस रखती है या फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू वो प्राइस रखी जाती है जिसके बेसिस पे सब्सक्राइब होता है. उसके बाद वो मार्केट में लिस्ट होता है और लिस्ट के बाद वो ओपन होता है ट्रेडिंग के लिए. प्रमोटर्स अपने शेयर कुछ समय तक नहीं बेच सकते तो उसका असर नहीं होता, पर बाकी के आम लोग जो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, खासतौर पे पब्लिक, वो उसे बेच और ख़रीद सकती है. और उसी के बेचने और ख़रीदने पे निर्भर करता है कि शेयर प्राइसेस कैसी रहेंगी. अगर लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और उनके लगता है कि बहुत ग्रोथ है और आगे चल कर के इस आईपीओ के जिस लेवल पे इसको दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, तो आपको प्राइसेस बढ़ी हुई मिलेंगी, वरना आपको एग्जिट मिलेगा. सेबी का इसमें रोल सिर्फ यही रहता है कि देखे कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो रही, खासतौर पे जैसे प्राइसेस गिरी तो किसी प्रमोटर ने नहीं खरीद लिया या कोई और मैनेजमेंट के जने के पास कोई ऐसा सिग्नल नहीं था या इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसकी वजह से वो उसके ऊपर मुनाफा कमा पाया. खासतौर पे ये भी देखना ज़रूरी है कि लिस्टिंग फेयर तरीके से हो. जहाँ तक फाइनेंशियल हेल्थ की बात है, देखिए जब फाइनेंशियल हेल्थ है वो ट्रेडिंग से फ़र्क नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपनी ने मार्केट से पैसा ऑलरेडी उठा लिया है और वो पैसा अब वो इस्तेमाल करेगी अपने बिजनेस के लिए या तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए या जिस चीज़ के लिए भी उसने आईपीओ में मेंशन किया होता है. तो फाइनेंशियल हेल्थ पे तो नहीं फ़र्क पड़ता, पर जिसे हम मार्केट वैल्यूएशन कहते हैं या मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है. और अगर शेयर प्राइस कम होती है और गिरती है तो कोई भी और कंपनी वाला या कोई और रिटेल ट्रेडर बाकी उस कंपनी के शेयर्स एक्वायर करके उस कंपनी पे कंट्रोल भी ले सकता है. At the same time, Yamini, let me also add on here that there have been a slew of IPO entries in the past few months which have seen a bumper opening, in fact. And on a lighter note, actually, if the valuation or if the opening is on the lower side, then you have an opportunity in the secondary market to just pick those stocks if you had missed that out in the process of the primary market at the time of IPO. Yes, at the time of that way you can average your yes, absolutely bills. Absolutely. एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलुरु. प्रसाद साहब नमस्कार, सवाल पूछ लें. हेलो Mr. Prasad, can you hear us from Bengaluru? No, I think we have lost the contact. वरुण है गुरुग्राम से जुड़े हुए. वरुण जी स्वागत आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप यामिनी से. वेरी गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम. गुड इवनिंग यामिनी मैम. गुड इवनिंग. माय question is related to the production linked incentive scheme, PLI scheme, by our government. Recently our ex-governor Dr. Raghuram Rajan has been critical of the PLI scheme that the government runs. What he has reasoned is that that we are basically paying companies to manufacture here, and in the long run it is not of much use. However, the government has been really been impressive in giving chance to companies like Apple, who have been doing a record number of exports from here. So what's your take on what he has to say? बिल्कुल बिल्कुल वरुण, हम समझ गए. पीएलआई पे क्या टेक है आपका? सिंपल जी देखिए, पीएलआई स्कीम प्राइमरली एक इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है जिसके अंदर कोशिश की गई है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को आउटलाइन करते हुए, और उन सेक्टर्स में जो निवेश करना चाहते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी आती है और उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ग्रोथ भी आती है. जहाँ तक क्रिटिसिज्म की बात है, अगर आप देखें तो इंडिया सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी बेहतर कर चुका है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इसका कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द जीडीपी वो काफ़ी कम रहा है. आल्सो जो प्राइसेस रहती हैं सप्लाई और डिमांड की मिसमैच की वजह से वो अभी भी डोमेस्टिक मार्केट को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाती और हम अपना जो प्रोडक्ट है वो इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते. चाइना एक ऐसी इकोनॉमी है जो प्रोडक्ट्स को बाहर के देशों में बेच करके उसने काफ़ी ग्रोथ पाया है. तो एक्सपोर्ट्स को लेकर के या अपने जो स्पेसिफिक
इन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को लेकर के और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के फैक्टर्स रहते हैं, उसमें ये प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम एक अटेम्प्ट है to have a better avenues for both the industry and for the people in terms of employment and in terms of production and in terms of consumer prices also. We are reconnected with N.R. Prasad from Bengaluru. Mr. Prasad, can you hear us? Hi, good evening, Market Mantra. Good evening, Mr. Prasad. There's one question, Mrs. Agarwal. Yes. See, after successful launch of Chandrayaan-3, both the digital and the print media listed out about 8 to 10 companies who contributed largely for the success of this Chandrayaan-3. Now, these are continue to supply those components in the coming days as the expedition is going to be multiplied. My question is it worth investing in those companies who contributed all those components for this Chandrayaan-3? Thank you. Well, when we talk about development, there are a lot of factors that participate in it, and it's important to understand that when we were able to successfully launch out to Chandrayaan, we became a part of one of those few countries who have reached to the south pole of moon. And again, it's essential at times for any country to internationally put its stand in terms of science and technology, innovation and development, so that the work at the domestic level is recognized internationally, and it gives recognition not only to the country but to its countrymen, whether it's for the diaspora or whether it's for people who are working in many of the educational institutions or research organizations or even in companies. So when we talk about whether it is really helpful, it must be undertaken in terms of both the costs and the benefits, and a lot of times development because if we don't develop new technologies and new innovations, we may be very far away from what others have developed. So those investments are very important. और गुरुनाथ जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले हम फटाफट बता दें कि एशियाई बाजारों में आज क्या हाल रहा। पूरे एशियाई बाजारों में बढ़त रही। चीन द्वारा शेयर ट्रेडिंग पर लेवी कम किए जाने से बाजारों में उत्साह बढ़ा हुआ है। जापान का निकेई सूचकांक 1.7% बढ़ा, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.1% की मजबूती रही। दक्षिण कोरियाई बाजार 0.9% बढ़ा। हांगकांग के हैंगसेंग में भी 0.9% की ही बढ़त रही। सिंगापुर बाजार 0.7% मजबूत हुआ। यूरोपीय बाजारों में भी बढ़त बनी हुई है। फ्रांस का कैक 40.5% बढ़कर काम कर रहा है, जबकि जर्मनी के डैक्स में 0.3% और लंदन के फुटसी में मामूली सी बढ़त बनी हुई है और वहां कारोबार चल रहा है। Moving on to rupee, in the forex market, the rupee closed at 82 rupees and 63 paise against the US dollar. The dollar index, which indicates the US currency's strength against a basket of 6 other leading currencies, was at 104.14 in the intraday trade. And joining in is our regular caller once again, Gurunath from Thane. Gurunath ji. सर नमस्कार। नमस्ते। हाँ यामिनी मैम को नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मेरा क्वेश्चन छोटे छोटे जो है मैम मैं जो ऐप होते हैं उनमें जो ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो इसका जैसे यूपीआई हो, पेटीएम वगैरह जितने भी ऐप्स है, तो इसकी लिमिटेशन कितनी है? मतलब एक समय में हम दूसरे अकाउंट में एक बैंक से दूसरे बैंक में मतलब लिमिटेशन कितने अमाउंट हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है मेरा कि आरबीआई तो हमेशा मतलब जो नए इनोवेशन ये ट्रांजेक्शन के मामले में लाती है, जैसे अभी डिजिटल करेंसी की बात कर रही थी, इंटरनेट की, तो कभी कभी कस्टमर मतलब हम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा सेफ रहेगा। थैंक यू मैम। जी देखिए, ऐप्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो 1 लाख पर अकाउंट है, तो आप उतना अमाउंट कर सकते हैं ट्रांसफ़र। और जहाँ तक सेफ्टी की बात है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो रिकग्नाइज्ड ऐप्स हैं आप उन्हीं पर करें ट्रांजैक्शन, और ऐसे किसी भी वेबसाइट पे या लिंक को ओपन ना करें जिनको आप जानते ना हो या जिनमें आपको हल्का सा भी सस्पिशन हो। और जब आप वेबसाइट से भी करें तो HTTPS
जो एस होता है वो देख लें कि वो एक सिक्योर्ड वेबसाइट है या नहीं है, खास तौर पे जब बैंक्स के वेबसाइट पे जाते हैं, ताकि आप अपना अकाउंट और बाकी की डिटेल्स वहाँ ना दे दें. And also look at the lock pad symbol at the That beginning says of security. in your browser. Yeah, In so the that browser. signifies that it's a secured URL that you are accessing. Next caller is Shankar from Bhopal. Good evening, Market Mantra team. Good evening, Shankar. Go on with your question. Sir, madam, everything is measurable, the economic growth, the inflation, for example, the stock market. What is the measurement for inefficiency of economic inefficiency and corruption? Is there any measurement like that, and how far we stand in 1980s, 90s, and 2000 and now? Do you have any idea on this, or can you throw some light on this, please? Thank you. So actually, when you talk about economic growth, inflation and others, these are macroeconomic aggregates which we measure through indexes or the others that are there. Well, I don't I remember any economic inefficiency measure or index that has been developed so far. However, there are indices which do talk about potential growths, and which also talk about how much efficiency can be achieved through the present resources. So, minus that of the economic efficiency that you achieve can actually tell you the economic inefficiency. There are certain reports which talk about corruption, and they measure corruption in different sectors and also rank countries on the basis of corruption. So I suggest that you can possibly look at various websites where the corruption indexes are mentioned, which identify that. और देखते हैं सोना चांदी कैसा रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त आपूर्ति वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 55 रुपये बढ़ा. प्रति 10 ग्राम सोना 58,695 रुपये पर रहा. चांदी की कीमत में हालांकि 58 रुपये की गिरावट रही और ये प्रति किलो 73,491 रुपये पर रही. And moving on to the oil story, oil prices rose today with a positive global outlook in the intraday trade. Brent crude was trading at $84.53 per barrel. West Texas Intermediate, that is WTI, crude price was at $80.04 per barrel when reports last came in. Joining us is Alok from Delhi. Alok, welcome to the show. Sir, good evening, sir. My question is, sir, how do we select the mutual fund? And among the various options of the mutual fund? See, when you select mutual funds, it's very important, first of all, identify your objectives that are there as to why do you want to invest. Are you investing for safety? Are you investing for returns? And what is your risk appetite that is there? Also, you understand that what is your age. So if your age, whatever is your age, 100 minus that particular age, usually you can invest in equities. And whatever is the left amount you can invest in debt. So if you're 25 years, 75% you can invest in equities and 25% is the thumb rule, not the regular rule. So a thumb rule that is there is that you can invest in debt. But if you're about 60, then only 30% should be invested in equities. Also, mutual funds have a large range that come from. So you can invest only in debts, you can invest only in equities, you can invest in growth equities, you can invest in balanced funds. But again, it depends upon what return you are seeking, which particular investments you're looking at. Are you looking at large caps, small caps, mid caps? What risk you're willing to take and how much safety you want of your principal. So please always remember that mutual funds are based upon NAVs and they are actually subject to market risk, which means that the mutual funds move up and down as the market moves up and down. And also there is a hybrid mutual fund in which you can invest. That's a basket of, you can say, thematic, large cap, mid cap, small cap. So that is another one for people who don't want to unnecessarily risk their capital and go on about it. So आज के लिए निश्चित इतना ही, क्योंकि वक्त अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है. हमारे सारे श्रोता जिन्होंने हमें फ़ोन किया, अपने सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और ख़ास तौर पर यामिनी, आपका स्टूडियो आने और श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you so very much, Yamini, for having come in and shared your views. And before we close, a reminder of the headlines once again. In B20 Summit, PM Narendra Modi has called for a global framework to ensure the ethical use of AI. Indian and the UK officials continue their negotiations to iron out differences on the proposed free trade agreement FTA, and the key domestic share
indices witnessed gain. Sensex closed near 65,000 mark. Nifty finished above the 19,300 level. आज के लिए मार्केट मंत्रा में बस इतना ही. कल शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक मार्केट मंत्रा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार. Goodbye. Market Mantra.